Hello. Welcome to the Scroll interviews with the authors and translators of the 5 novels shortlisted for the 2023 JCB Prize for Literature. We're talking to Manoj Rupda, author of I Named My Sister Silence, and Hansda Sowvendra Shekhar, who translated the novel from the Hindi. Good evening. Congratulations on making the JCB shortlist. Thank you. How are you feeling? जाहिर है बहुत खुशी की बात है और मुझे तो शायद आपको आश्चर्य हो कि जेसीबी प्राइज जैसी कोई चीज है ये 6 महीने पहले मालूम हुआ और मेरे दोस्त हैं खालिद जावेद साहब, उनका उपन्यास जब आया मेरे पास और उसमें लिखा हुआ था भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार जेसीबी से सम्मानित, तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा ये जेसीबी क्या है तो उन्होंने बताया कि बहुत भारतीय भाषाओं को सब रिप्रेजेंट करने वाला अंग्रेजी में एक बहुत बड़ा प्रयास है जेसीबी का। जाहिर है कि अगर पूरी भारतीय भाषाओं को प्रेजेंट करने वाला एक कोई मंच है तो उसमें अगर हमारी कोई उपस्थिति दर्ज हो रही है तो लेखक को ये लगता है कि नहीं, कुछ बात हम जो कहना चाह रहे थे वो आगे जा रही है। So Mr. Rupda said that he is very happy at being shortlisted for the JCB Prize, and he also says that he came to know that a prize called the JCB Prize exists only 6 months ago when he received his friend Mr. Khalid Javed's book, which was the winner of the JCB Prize, and he saw on the cover of that novel winner of the JCB Prize. And he says that it is a very important initiative by the JCB which honors books in all the Indian languages. So it is a very happy moment for him. And how do you feel as the translator? I am very happy. I can't say I don't know. This was my first published book as a translator. And I had wanted to translate Mr. Rupda since the year 2006. I mean, it was like 17 years ago, like I've already said in the Scroll podcast. And because of JCB Prize, I got to meet him as well. I'm happy. I really enjoyed listening to your podcast episode, and I really enjoyed reading the book. So a lot of questions that I had about the book, about various themes in the book, they were answered in the podcast. So what I want to talk to the both of you today is a little bit about your process, a little bit about the craft of writing, about the craft of translation. So my first question really is very simple. Why did you decide that the literary arts were for you in any form? That what made you, Mr. Rupda, think that what I want to do in my life is right, that I really enjoy this? Do you remember sometime in your life that when you first wrote something and you wanted it to be published, when you wanted it to be seen by other people? And the same for you. What was it about reading or seeing other people write or translate that made you think I could really enjoy doing that, or I see myself doing that? अब ये सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि वैसे मेरी मतलब उस तरह की पढ़ने लिखने की कोई दुनिया थी ही नहीं, मतलब फॉर्मल एजुकेशन भी उस तरह की नहीं थी मेरी, तो पढ़ने लिखने का कोई सिलसिला नहीं था। और एक थिएटर ग्रुप से मैं जुड़ा और उसमें जो लोग थे वो सब काफी मतलब इंटेलेक्चुअल्स थे। वहां से थोड़ी सी एक दिलचस्पी बड़ी पढ़ने लिखने में, तो लिखना तो बाद में, लेकिन जो डायरेक्टर थे उस ग्रुप के वो ये कहते थे कि यार तुमने बहुत पहले स्कूल छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? और ये कहते थे कि ये स्कूल से बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है, स्कूल में तो आपका जो सिलेबस है उसकी एक लिमिटेशन है, लेकिन बहुत सी ऐसी किताबें हैं, बहुत उसका कोई मतलब अंत नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक लाइब्रेरी का मेंबर बनाया और फिर जब थोड़ी पढ़ने में दिलचस्पी जागी तो एक अखबार उस जमाने में आता था, मैं दूर शहर में था तब, उसमें कॉलम आता था संपादक के नाम पत्र, और उसमें कोई भी एक छोटा सा पाठक अपनी एक कोई चिट्ठी लिख दे और उसमें छप जाती थी। तो मेरे एक दो उसमें पत्र छपे तो ये साहब बड़े खुश हुए जो हमारे डायरेक्टर थे,
उन्होंने कहा कि ये तुमने जो लिखा है ना उसमें कहानी बन रही है, तुम्हारे अंदर एक फिक्शन राइटर के गुण है। अब वो उन्होंने जोश दिलाया तो मैंने फिर एक पूरी कहानी लिख डाली। तो ये इस तरह से फिर शुरू हुआ। यानी ये किसी के कहने से, किसी के प्रोत्साहन देने से और थोड़ा बहुत अपनी रुचि, थोड़ा बहुत अपना, और वो एक बढ़ता हुआ फिर सिलसिला आगे चलता गया फिर ये। So Mr. Rupda said that he does not come from a literary background. However, he was a part of a theatre group where there were learned people, intellectuals were there, and the director of the theatre group, he told Mr. Rupda, why did you leave school so soon? And he also told him that even outside the the confines of the school, there is a whole wide world. There are books to be read. So Mr. Rupda, he used to live in Durg at that time in Madhya Pradesh, Ji. And there he read Hindi newspapers, and where there was this column called Letters to the Editor. And Mr. Rupda, he started writing into to this newspaper, and his letters got published. And then the director from the theatre group, he read those letters which Mr. Rupda used to write and which used to be published in the paper, and he saw that there was a story in those letters. He was impressed by what Mr. Rupda had written, and he told him that you can expand this into a story, this can make a story. And that is how Mr. Rupda, he started writing stories. And what about you? What made you think that translation is something that I find fulfilling, that it is something that I want to spend my time doing? Was there a moment, or did you just enjoy, the play of languages enough one day that you said, I enjoyed the play of languages, actually. There is this thing I told in the podcast as well to Shairi, that as child we used to play a game in which we used to translate Bollywood songs, which were in Hindi, into Santhali, which is my mother tongue. Mm-hmm. So that is how, the first translations happened with me. And then I think it was in 15, 16. Yeah, around 2015, 2016, I got the chance to, translate actual stuff, poems and all. And I loved it. I enjoyed, telling a story which is in one language into another language. So that is how I carried on. Tell me a little bit about authors you like, or translators whose work you admire, which in your own writing, in your own translation, in any kind of creative work, you kind of see as a standard or something that you want to emulate. इतनी लंबी उम्र से इतने सारे लेखकों को पढ़ा है और इतने सारे मास्टर्स हैं, पर अगर पीछे मुड़कर अब देखा जाए, जैक लंडन मेरे बहुत प्रिय लेखक रहे, और स्टीफन zweig वो बहुत प्रिय लेखक रहे। पर अब जैसा एक सिलसिला जो बनता है ना शुरू में पढ़ने का, कि हमको पहले उपलब्ध क्या चीजें थी, तो जब हम जवान हुए उस जमाने में एक इसकस नाम की एक संस्था थी जो रूस और भारत के बीच की दोस्ती का एक कल्चरल प्लेटफॉर्म था। तो उसमें बहुत सारी रूसी किताबें बहुत सहज रूप से छोटे शहरों में भी उपलब्ध हो जाती थी। तो बहुत सारा रूसी जो लिटरेचर मैंने टोल्स्टॉय को, दोस्तोयेवस्की को, ये सब मैंने यूं ही मतलब चूंकि घर बैठे मिल जाता था वो। फिर उसके बाद फिर यूरोप के जो क्लासिक्स थे वो पढ़े। उसके बाद फिर बढ़ती उम्र के साथ जब दायरा बढ़ता है पढ़ने का, तो फिर जो लैटिन अमेरिका में जो काम हुआ राइटिंग का, एक नया जो एक समय ऐसा आ गया था जब ये घोषणा कर दी गई थी कि उपन्यास की मौत हो गई है, और लैटिन अमेरिका ने उपन्यास को इस दावे को कि उपन्यास मर चुका है उसको झूठा साबित किया, और बहुत खूबसूरत उपन्यास लैटिन अमेरिका से आए। तो ये भी एक दौर था, उसका भी मतलब मैंने 7-8 साल तक लैटिन अमेरिकी लेखकों को पढ़ा। एक कोना जो बहुत छूट गया था, जो आमतौर पर हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं होता, नॉर्वेजियन राइटिंग का।
तो हमारी एक हिंदी की काफी अच्छी एक राइटर है तेजी ग्रोवर, उन्होंने बहुत खूबसूरत कुछ ट्रांसलेशन किया है। उसमें खास तौर से नॉर्वे के लेखकों का जो ट्रांसलेशन है वो तो, और मुझे मालूम पड़ा बाद में कि ये सारा जो लिटरेचर था इसमें कई तरह के, जो मैंने पढ़ा रूस का, यूरोप का और लैटिन अमेरिका, इसमें कई तरह के सामाजिक द्वंद्व थे, राज्य के साथ, धर्म के साथ, सत्ता के साथ, मनुष्य के जो टकराव थे वो सब थे उसमें। लेकिन मनुष्य की आत्मा का वो स्वर जो सीधे प्रकृति से जुड़ा है वो नॉर्वेजियन राइटिंग में मुझे दिखाई दिया। और इत्तेफाक है कि आज हम यहाँ बात कर रहे हैं और एक हफ्ते पहले नॉर्वे के जो लेखक हैं उनको नोबेल मिला है, और उनका लिखा हुआ उपन्यास मैंने लगभग अभी 6 महीने पहले ही पूरा पढ़कर किया। तो ये पूरा, इतने सारे लेखक हैं तो उसमें आप कैसे मतलब चुन सकते हैं कि कौन, लेकिन ये है कि मैं ये 2-3 तो जो है ना मेरे बहुत फेवरेट हैं, जैक लंडर और स्टीफन ज़्विग मेरे बहुत प्रिय लेखक हैं। Mr. Rupda said that he loves the works of Jack London and Stephen Zweig, who happen to be his favorite writers. And he also enjoys the works of Russian masters like Tolstoy and Dostoevsky. And then he enjoys European classics and Latin American novels. And Mr. Rupda said that there was a time when it was being said that the novel is dead. But Latin American writing, they proved that claim to be wrong. And he enjoys Norwegian books, and there is this translator Teji Grover who has translated books from Norwegian, and he is happy that there is this Norwegian author he admires, John Foss, and he won the Nobel Prize in Literature just some days ago. So these are the writers he admires. What about you? Is there somebody whose work you look up to and think this is the kind of translation I want to do, or this is the kind of writing in general I want to emulate in my own work? Not necessarily in the languages, of course, that you yourself are fluent in, but anywhere in the world. Clearly, I mean, the ability to read from different languages, what translation can do, we see its limit is just, non-existent. What literature from around the world can do. What has been the story for you? Right now, I'm completely in awe of the translators who are translating Kigo Higashino, because he has become my new favorite writer, and I just started reading him this year only. I started with Devotion of Suspect X, and then I read Malice and A Death in Tokyo, and Salvation of a Saint. So I love that kind of translation. And right now I'm reading this book, Jora Shanko by Urmila Chakraborty, and I think she's an elegant writer. And there are 2 books which I often go back to. One is Arundhati Roy's The God of Small Things. Arundhati Roy also makes a cameo in Mr. Rupra's novel Kale Adhyay, Yes. I Need My Sister Silence, and Jhumpa Lahari, Interpreter of Melodies. And of course, one day I would want to write something like how Urmila Chakraborty writes, or Manju Kapoor writes, a very sprawling family saga with all the intricacies and all. So let's hope. Can you tell us something? I mean, you just told us something you're reading right now Yeah. that you would recommend. Mr. Rupda, would you recommend something you're reading right now that you're really enjoying? अभी कुछ दिनों पहले एक तो उपन्यास मैंने पढ़ा, हंगारी उपन्यास है, वो हिंदी में दरवाजा और वैसे द डोर के नाम से अंग्रेजी में, बड़ा खूबसूरत उपन्यास है। खालिद जावेद साहब का उपन्यास मैंने अभी पढ़ा, ये जो पैराडाइज ऑफ फूड, उसका जो मुझे हिंदी में ट्रांसलेशन मिला वो पढ़ा मैंने। बहुत पेचीदा और बहुत तनाव पैदा करने वाला उपन्यास खालिद जावेद साहब का ये। फिर उसके बाद अभी जो कुछ दिनों पहले जो मैंने पढ़ा, वो जो अभी मैंने जिक्र किया कि वही नॉर्वे के लेखक जिनको भी नोबेल मिला है, उनका उपन्यास हिंदी में, उसका जो मैंने ट्रांसलेशन पढ़ा, उसका शीर्षक है आग के पास आलिस है यह। तो वो
अच्छा, तीनों बहुत अलग तरह के उपन्यास हैं, लेकिन तीनों पढ़ने लायक है, और तीनों की अपनी भाषा, अपना स्वर, और तीनों लेखक की अपनी रेंज। ये तीनों अभी की पढ़े हुए मेरे ये 3 उपन्यास हैं। उर्दू का खालिद जावेद साहब का हंगारियन उपन्यास और एक नॉर्वेजियन उपन्यास। So there is this, of course, there's Khalid Javed's novel which won the JCB Prize, which Mr. Rupda he read in Hindi translation, and there is a Hungarian book and a Norwegian book which he would like to recommend. While we're on the theme of books you admire, of authors you admire, I want to know a little bit about your process of writing. One, is there a routine you have? Is there a step-by-step process of how you get into the mindset of writing? That, do you write in the morning? Do you write in the evening? Is there something you need really present around you to get the words out? But the second thing I want to know is when you're reading your own writing, when you're in the process of creating drafts, what elements of your own writing do you pay most attention to make sure that this is something I can put out in the world? So at the level of, I'm thinking not just at the level of, is this a believable character or not, but I'm thinking at the level of technique. Is there an element of writing that you especially admire when you read somebody else's work that makes it good writing for you, that you're also very careful about in your own writing? पहला जो सवाल का जो हिस्सा है, रूटीन का और मेरी लिखने की जो दिनचर्या और सारा जो मामला है, शुरू से मैं लगभग सुबह जल्दी उठने वालों में से हूँ। तो एक निश्चित जो दिनचर्या है मेरी, उसमें सुबह 8 से 10 बजे तक लगभग, मतलब वो समय मेरा अपना है, और या तो पढ़ना लिखना होगा या दोस्तों से बातचीत होगी, लेकिन वो बिल्कुल 2 घंटे मेरे अपने हैं। तो ये सारा काम मैं अपनी फैक्ट्री के ऑफिस में ही करता हूँ, और उसके बाद जब मेरा वर्कशॉप शुरू हो जाता है तो फिर अपनी दुनियादारी दूसरी शुरू हो जाती है। लेकिन ये 2 घंटे जो है उसमें, और बाद में कभी ऐसा कुछ हुआ कि भाई कोई चीज फ्लो में चल रही है, या तो कोई उपन्यास में जो पढ़ रहा हूँ बहुत खींच रही है वो, तो फिर जो दूसरा जो काम काज है उसको मैं थोड़ा स्थगित कर देता हूँ। लिखते समय भी ऐसा होता है कि कभी कभी कोई बात अगर बहुत, मतलब अपने पूरे फोर्स के साथ आ रही है, तो मैं उसमें अपने जो दूसरे काम है उसको स्थगित कर देता हूँ। ये एक स्तर है। अब पढ़ते समय दूसरी जो प्रभाव की जो चीजें हैं कि भाई आप पढ़ते समय कितने लोगों को पढ़ रहे हैं, और फिर उनमें से हर लेखक की अपनी स्टाइल है। अच्छा, लिखते समय उनसे बचना, कोई भी चीज जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करती है तो लिखते समय आप बचोगे कैसे उससे? ये थोड़ा मुश्किल होता है। अब उसमें मेरा अपना ये तरीका है कि मैं पहले उसको आने देता हूं अपने भीतर, उस प्रभाव को आने देता हूं, और उसकी तरह से लिख भी लेता हूं। उसकी जो शैली है, उसका जो प्रभाव है, उसको मैं उससे लड़ता नहीं हूं, उसको मैंने फाइट करके उसको हटाने की कोशिश नहीं करता। उसने अगर मुझे प्रभावित किया तो जाहिर है उसके अंदर कुछ ऐसी बात है, तो मैं बहुत प्यार से उसको अपने भीतर स्वीकार करता हूँ। फिर वो रमता है, रमने के साथ में फिर मेरे लेखक के साथ में उसकी एक ट्यूनिंग बनती है। फिर उतने ही सहजता से मैं उस प्रभाव को वापस लौटाता हूँ, और मुझे जो मेरा काम करना है वो मैं अपने ढंग से लाता हूँ, लेकिन मेरे जहन में उसका एक मीठा सा असर होता है। अगर उसने बहुत प्रभावित किया है तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मैं किसी लेखक से बिना प्रभावित हुए लिखता हूं या मैं बहुत मौलिक लेखक हूं। हर लेखक के पास कुछ ना कुछ इंप्रेशन दूसरे लेखक की आती है, वही सिलसिला आगे बढ़ता है। अभी तक की राइटिंग तो पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि पहले जो हुआ है उसके साथ में उसको देखते हुए उसको आदमी वाक्य बनाना कैसे सीखता है? किसी पुराने राइटर को पढ़ेगा तो ही सीखेगा ना। तो वो तो एक सिलसिला है, प्रोसेस है। तीसरा जो भाग था वो सवाल था, वो क्या था? वो ये था कि I'm forgetting. चलो ठीक है। This answers the question. इससे भी समझ आता है आंसर। आप एक बार ट्रांसलेट करें। Okay. So Mr. Rupda says that he is a morning person. He rises early
and he writes while he's at work. So that is how he, goes about his writing. And about being inspired by other writers' work, he says that it is difficult to not be influenced by other writers, because how does one start writing? By reading others. So whichever part he likes in other writers' works, he tries to imbibe them in his own writing, but he writes in his own way, his own style. So this is. I have a question for you now. Yeah. Translation often has always seemed to me, like striking the right note of music for an occasion. Yeah. That you have to try out a couple of notes until you land on the right one. Yeah. I think often in translation, especially when you are comfortable with two languages, fluent in two languages, you can tell that if you're translating a sentence from one language into the other, something is not fitting, the tone is not right. But if you're fluent in both languages, it's difficult to place because it implicitly makes sense to you, but perhaps to the reader, the tone might not convey in the manner that it does to you, somebody who's not a native speaker of the language. So when you're looking at a passage, when you're looking at a sentence and translating it into a different language, how do you ensure that the tone is right? Or if you are ever agitated that this is not quite coming right, it technically sounds right, but it's not striking the right note, how do you work through that process? This has happened a lot of times. Yeah. And my solution to this is I do not try to do literal translation. I understand the prose, or even if it's poetry. It is only when I'm not able to, I do not ask the original writer, what is the meaning of this? I do this at the end. When I was translating Kale Adhyay, Mr. Rupla's novel, I did not ask him, ye kya hai, ye kya hai, ye kya hai. Only once in a while, when I've just finished translating the whole part, I confirmed with him that yes, is this okay? I understand the text first. And it has to make sense to me. So that is. I want to ask a question about the book that is also, I think, a larger question about the craft. What stood out to me about I Named My Sister Silence is that our protagonist is often sort of the vessel of other people's stories. That it is only through him that we hear about what goes on in the lives of the people that he meets and how they emotionally process those events. So there is a kind of emotional distance in the novel. We only hear his account of things, and we also only get a kind of thin account of how he feels about things. More often than not, things are happening and he's going through them. So it is a minimalistic emotional account. What I want to know is how emotionally attached are you to your characters when you're writing them? What distance do you keep? Or how much in their head do you imagine yourself to be? How they would react in a situation or when they're placed in a room, while maintaining that kind of an almost minimalist emotional tone in the novel, which really does wonders for this novel, for Kale Adhyay, because it tells you something essential that you need to know without being melodramatic about it. So I want to understand a little bit about your emotional relationship with your characters. How preoccupied are you with them while you're writing them? इस उपन्यास का जो नरेटर है ना, वो एक आउटसाइडर है, और ये हमारा जो दौर है उसके पहले का जो दौर था जिसमें काफका, कामू और सात्र, इनके उपन्यासों में जो आउटसाइडर थे, तो वो जो आउटसाइडर जो थे वो एक पूरे ब्रह्मांड के साथ मनुष्य का जो संबंध है उसको सोचते हुए, उसी के बारे में सोचते हुए अकेले पढ़ते गए। हमारा जो पीरियड है उसका जो आउटसाइडर है
बहुत सारी दूसरी चीजों पर नहीं सोचता है, वो सिर्फ सिस्टम और मनुष्य के बीच के रिश्ते के बारे में सोचता है। और जैसे पहले जो आउटसाइडर थे वैसा ही ये भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि अभी का जो आउटसाइडर वो कोई सांस्कृतिक पिटार अपने सिर पर लाद के नहीं चल रहा है, और उसने पूरे ब्रह्मांड की चिंता करना छोड़ दिया है। वो सिस्टम और जो मनुष्य है उसके बीच के रिश्ते को लेकर के सोच रहा है। और आउटसाइडर जो है ना, वो कभी हस्तक्षेप नहीं करता, वो कभी इंटरफेयर नहीं करता, वो चीजों के बीच से गुजरता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तटस्थ है, उसका अटैचमेंट है, और वो इमोशनलेस भी नहीं है। पर उसका जो इमोशन है ना, वो उस तरह से मुखर नहीं है, यानी वो जाहिर नहीं करता है, वो हस्तक्षेप भी नहीं करता है, अपने इमोशन को भी जाहिर नहीं करता है, लेकिन सोचता है। और आप ये देखिए कि इसमें लगातार उसकी सोच चल रही है। वो बार बार ये कहता भी है कि भाई मैं जो कुछ भी सोचे जा रहा हूं उसका अर्थ क्या है। तो एक तरह की निरर्थकता की भावना उसके अंदर है भी कि मैं सोचे जो जा रहा हूं बहुत, लेकिन जो वास्तविक दुनिया है वो तो अलग है। लेकिन उसकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं आखिर जो उसको जो चिंता है वो मनुष्य की है। और कोई भी लिटरेचर हो दुनिया का, वो एक ही बात, आर्ट या लिटरेचर का जो काम है वो एक ही है, इंसानी कदरों की फिक्र करना। अगर इंसान परेशान है तो आर्ट और लिटरेचर जो है वो उसके पास जाएगा और कोशिश करेगा कि परेशानी का कोई उसका हल निकले। सारी कोशिशें तो वही होती है लिटरेचर में कि आदमी अगर परेशान है तो क्यों है। तो वही इस उपन्यास का भी सिलसिला है। दूसरा जो मामला मैं ये सोचता हूं कि ये छोटी मोटी चीजों के बीच से नहीं गुजर रहा है, बहुत बड़े स्तर पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बहुत बड़े स्तर पे चीजें टूट रही है, बिखर रही है। तो जो प्रतीक और बीम जो है जहाज के टूटने का या हाथी के बिखर जाने का, वो तो एक सिंबल है। तो बड़ी जो घटनाएं हो रही है, इतने बड़े बड़े जो विखंडन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके कोई राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कारण होंगे। और आखिर में उसका, उन सब चीजों का नतीजा किनको भुगतना पड़ रहा है। मामला तो वहां आता है कि भाई ये सारी चीजें जो होती है और जितने भी तरह के वायलेंस होते हैं या जितने भी तरह का विखंडन होता है, नतीजे भुगतने वाले कौन है? एकदम आखिरी के लोग हैं। तो वो वहीं घूम फिर के पहुंच रहा है, वो अंत में इतनी बड़ी यात्रा करने के बाद फिर वहीं पहुंच रहा है वो, क्योंकि लोगों के सवाल वहीं खड़े हुए हैं, वो हल नहीं हुए हैं अभी। So Mr. Rupda said that the narrator of his novel Kale Adhyay, I Name My Sister Silence, he's an outsider like the hero of works by Kafka, but like those heroes from the classics, he does not have a philosophical view. His the hero of the narrator of Mr. Rupda's novel, his concerns are more immediate. He is more concerned with the system. However, he is not untouched by the system. He is an observer, and he is affected by those circumstances, and that is why he is telling the story. Also, the story in this novel is about a displacement which is very huge, very massive in nature, and the death of the elephant in the beginning of the novel, the elephant who is killed by the wild dogs, it is a metaphor on this displacement and other destruction that is taking place. So the narrator, he's like showing a reflection of what is happening in the world. So I want to ask you a little bit about the process of editing, about the process of revision, which I suppose is much different from how an author goes about doing it, because they are in some ways in control of the plot. They can change things as they like because it is still
in many ways an original work under creation, a kind of freedom that might perhaps not be available to the translator because you're working within the bounds of an established story. Yeah. So what you have to produce, or the story you have to tell at least, has already been decided. What is given to you is to translate it into a different story and ensure that it still strikes the same notes as the original one. And I suppose it involves a lot of back and forth with your editors while you're in the process of pitching it, while it is later somewhere in the publication process. And I want to know if there's something particular about it that interests you or irritates you, for that matter. If there are certain kinds of demands that you find, not fair to the work that translation often is, or expectation about it that it should read a certain way when language can often take shapes that surprise us. So tell me a little bit about your editing and revision process when you go through that back and forth with your editors, with your publishers. What is that like? What about it do you enjoy? What about it is frustrating? There is another word I would like to add with editing and revision, that is modification. Mm-hmm. The thing is, when you are translating a work, like I said already, it should not be literal translation. The work should make sense to, of course, the translator who is translating it, and to everyone who is going to read it. And so this revision editing process, it starts in the translation stage only. You have to tell a story. And often it is possible that the way the story has been written in the original language, it might not make sense if it is translated the same way. Like if in a certain language it is A, B, C, D, then in another language it is not necessary that it should be A, B, C, D, only then will it make sense. It can be C, Z, K, L, anything. So this rearrangement or modification, it begins at the translation stage only. You have to tell a story. You do not have to follow it how it is. Okay. The story has already made sense in the original language. Now it has to do the same in the translated language. And of course, there is no sort of rule. As a translator, when I'm translating, I try to make that work my own, except the plot, that is. Mm-hmm. I'm telling a story in a different language. So that is my responsibility, how I'm going to do it in a proper way. So this editing, revision, it all starts, quite early on. Yeah. I have a question for you. When I was reading I Named My Sister Silence, when I came to the later sections, I was surprised by the section on partition because it's not something that you expect in the story. It's not something you expect to hear from one of the characters because you thought that the novel was going one way. And I thought it made it that much more interesting, that it thinks about displacement, that it thinks about loss in all these different ways, what can cause it and how people deal with it. So what I want to know is that when an idea for a book comes to you, what do you start thinking of first? What usually sort of ticks you off? Is it a plot or is it a particular character? What comes to you first is this is the kind of skeleton of the story I want to tell? Or do sometimes you see personalities and say, I would take some of your characteristics and make a character out of it who would be perfect for a story, and the story comes later. So, yeah, just that. नहीं, प्लॉट का उस तरह का जो सिलसिला है आमतौर पे, वो अगर आप शॉर्ट स्टोरी कर रहे हैं तो एक थोड़ा सा एक फ्रेम किया हुआ एक प्लॉट होता है उसमें, और उसके आसपास आप अपनी चीजें रखते हैं. लेकिन उपन्यास लंबी दूरी तय करता है, तो एक पर्टिकुलर उसका कोई प्लॉट नहीं हो सकता. उसमें कथानकों के सिलसिले होते हैं, तो वो फिर जैसे आगे बढ़ेगा तो वो काल का जो विभाजन है वहां के भी पास जाएगा, और समय की उसमें कोई सीमा नहीं होती.
क्योंकि उपन्यास जो है ना वो इतिहास से भी जुड़ा है। उपन्यास में ये उस विधा की संभावना जो है उपन्यास विधा की, कि वो पूरे काल को समेटता है, उसमें से इतिहास को भी आने देता है और कल्चर के भी कुछ हिस्से आएंगे। फिर जो बहुत सारे ऐसे इतिहास में कही गई जो बातें हैं, जो राइटर अपने ढंग से उसको देखता है, क्योंकि बात जो कही गई है पहले जो साबित हुई है कि हाँ भाई ये घटनाएं हुई थी, अब लेकिन लेखक उसको किस नजरिए से देख रहा है। तो विभाजन के बारे में तो हजारों चीजें हैं। अच्छा, मेरे उपन्यास का निर्वाह कुछ इस तरह से था कि वो लंबी यात्रा पर, चूंकि माध्यम जो था वो जहाज था, अब वो पानी का जहाज तो पूरी दुनिया में जाएगा, तो वो पूरी दुनिया की कहानियों को भी समेटेगा। है तो मालवाहक जहाज, लेकिन वो जहां जहां जाएगा वहां वहां की कहानियों को भी तो समेट कर लाएगा ना। तो ये फॉर्म का एक हिस्सा था, उसमें विभाजन भी आया। फिर आप अगर ये कहेंगे कि भाई ये अमेरिका की जो लीचिंग वाला जो मामला है वो कैसे आया, तो वो सब उस तरह के सिलसिले में, क्योंकि उस उपन्यास का जो फॉर्म है ना उसके सेंटर में एक जहाज है पानी का, तो उस तरह से वो चीजें जुड़ती गई उसमें। बाकी उसमें वैसा कोई निश्चित ऐसा कोई प्लाट नहीं था, पर यह है कि एक दिमाग में एक मामला था कि भाई ये हम केंद्रित करें कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो कहना सिर्फ ये चाह रहा था उस उपन्यास का लेखक कि जो छोटी सी बात है कि दुनिया में जितने भी वायलेंस है, चाहे वो नस्लवादी हिंसा हो, चाहे धार्मिक हिंसा हो, चाहे राज्य की हिंसा हो, चाहे किसी भी तरह का नरसंहार हो, उससे ऊपर है इकोनॉमिक वायलेंस। ये बात मैं अपनी पहले भी कह चुका हूं, लेकिन चूंकि उस उपन्यास का केंद्रीय बिंदु है इसलिए मैं उसको बार बार दोहराता हूं और ये हमेशा कहना चाहता हूं कि हर तरह की हिंसा से बड़ी जो हिंसा होती है वो एक आर्थिक हिंसा होती है, और वही उसमें साबित करना चाह रहा है लेखक। So Mr. Rupda said that plot plays an important role if one is writing a short story. However, in the case of a novel is more like a series of anecdotes, and as the writer goes on writing those anecdotes, they go on, building upon those anecdotes. And in the center of Mr. Rupda's novel, there is a ship. So a ship sails all over the world. So in the same way, Mr. Rupda has told stories from all parts of the world. Like there is this lynching anecdote from the US. Then there is a partition of India. And however, the focus of the novel is on the various kinds of violences which are there. Like there is racial violence and violence born out of religious issues, political issues. However, the one violence which is not talked about that often, and which he has tried to focus upon, that is economic violence, which is the most severe kind of violence. My concluding question is to the both of you, and I'd like you both to answer. As we sit here today on the eve of the JCB shortlist, we're a month away from the declaration of the winning book. I'd like to know what literary success means to the both of you. If you picture it, what do you picture it like? अमूमन ऐसा होता है कि अगर कोई बड़ी कामयाबी मिलती है तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता है लेखक कि उसके बाद जो लिखेगा वो भी उस पैमाने का होना चाहिए, और लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती, जाहिर है। आपके पास अगर कोई बड़ा प्राइज है तो ये तय हुआ कि लोगों ने आपको एक लेखक के रूप में मतलब एक वो दिया, सम्मान दिया। अब उसके बाद अगर इतनी बड़ी स्वीकृति अगर मिल रही है पाठकों की, तो फिर वो सोच में पड़ जाता है कि मैं आगे जो करूंगा उसका स्तर बनाए कैसे रखूं। तो ये कॉन्शियसनेस जो है ना वो सबके अंदर आती है,
और अभी मैं कह नहीं सकता कुछ क्योंकि मंजिल अभी दूर है और लेकिन अगर मैं मुझे थोड़ा मेरा जो निजी स्वभाव है ना वो ऐसा है कि मैं बहुत ज्यादा किसी चीज से एक्साइटेड भी नहीं होता और बहुत ज्यादा कोई डिप्रेशन में भी नहीं जाता, तो मेरा मूल स्वभाव भी मेरे उस उपन्यास के कैरेक्टर जैसा है। Mr. Rupda says that the finishing line is still some distance away, so he does not know what to say, and he is basically like the narrator of his novel. He does not get excited or swayed away by a lot of things. So, and as for me, I don't know what to say, but I have a very selfish kind of an answer. I do not know how this will sound, but I will see literary success for me is when I will be able to pay my bills and live a comfortable life out of the earnings that I will have as a writer. I have a day job. I am a salaried professional. So when the success from my writings will allow me to quit the job and live comfortably yet, then I think I'll be successful. That's all. Well, thank you so much for your time and good luck with the rest of this process. Thank you for watching. This interview is part of the series of interviews with the authors and translators of the 5 novels shortlisted for the 2023 JCB Prize for Literature.